Welcome back, students. In this video, I will tell you about the different properties of Markov chain. First, we will define finite Markov chain and infinite Markov chain. So, what is finite Markov chain? Finite Markov chain. In previous video, मैंने आपको बताया था what is homogeneous Markov chain and non-homogeneous Markov chain. Homogeneous Markov chain के अंदर ट्रायल्स पे डिपेंडेंसी नहीं थी, बट नॉन होमोजेनियस मार्कोव चेन के अंदर ट्रायल्स पर कंप्लीट डिपेंडेंसी थी कि आप जो आउटपुट लेकर आ रहे हो कितने ट्रायल्स के बाद आ रहा है. ओके, कंप्लीटली दैट इज चेन इज डिपेंडिंग अपॉन दैट ट्रायल्स. और होमोजेनियस में वो ट्रायल्स पे डिपेंड नहीं कर रही थी. नाउ फाइनाइट मार्कोव चेन, लेट के बी द state of Markov chain. Okay, if K is finite means जो भी आप Markov chain define कर रहे हो उसके अंदर आप अगर finite states ले रहे हो, for example, if I am taking first and second, that is P11, P12, P21, P22. तो दिस इज कॉल्ड फाइनाइट मार्कोव चेन, क्योंकि इसके अंदर आपकी स्टेट्स आइदर 1 है आइदर 2 है, दो ही स्टेट्स आप फाइनाइट स्टेट्स लेकर चल रहे हो. तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फाइनाइट मार्कोव चेन. तो इनफाइनाइट मार्कोव चेन क्या होगा? इनफाइनाइट मार्कोव चेन के अंदर दिस स्टेट के विल बी इनफाइनाइट. ओके, फॉर एग्जाम्पल P11, P12 अप टू so on. यहाँ पे भी नहीं पता, बीच में कहीं पे P1N आया, P2N आया, सॉरी PN1 नॉट P1N, PN1 आया, PN2 आया अप टू so on. तो दिस इज कॉल्ड इनफाइनाइट मार्कोव चेन. ओके, एंड दिस इज फाइनाइट मार्कोव चेन. ये था डिफरेंस फाइनाइट और इनफाइनाइट मार्कोव चेन में. Now I will tell you कि what is the order of Markov chain. आपका मतलब क्या है कि जब भी आप Markov chain के order के बारे में बात करोगे तो it is order of Markov chain is a Markov chain is said to be of order as if probability that xn is equal to at state k given that xn minus 1 is equal to j nor, xn minus 2 is equal to jn minus 1 up to so on, xn minus s is equal to js minus 1 up to so on. If this probability is equal to probability of xn is equal to k given that xn minus 1 is equal to j nor up to so on, xn minus s is equal to js minus 1. If this complete probability is equal to this, then we will say that Markov chain which you have is of order s. ओके, नाउ व्हाट इज द मीनिंग कि मार्कोव चेन का ऑर्डर 1 है. ऑर्डर 1 कब होगा? करो अप्लाई यहाँ पे ऑर्डर 1 के लिए. इफ दिस प्रोबेबिलिटी विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ xn is equal to k given that xn minus 1 is equal to j no. This is called probability of a Markov chain of order 1 because I can write 0 as 1 minus 1, है ना. तो this is called Markov chain of order 1. Now अगर order 0 है तो स्टेट J से स्टेट K पे जो ट्रांजिशन होगा, स्टेट J से स्टेट K पे जो ट्रांजिशन होगा, दैट विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी एट स्टेट K. If this happens, then we say that Markov chain is of order 0. Okay, now I am going to tell you about the stochastic graph. And before that stochastic graph, I will tell you Markov chain as graph.
If you want to represent any Markov chain with the help of the graph, how will you show that? So what we will do here, we will represent the states of Markov chain by nodes or vertices of the graph. States I will represent by node or vertices. Okay. And second thing, transition I will represent by directed arcs. Directed arc का मतलब क्या होता है? एक एरो की हेल्प से transition states or transition I will represent by the help of directed arcs. For example, if I am having state I and state j, so say this is state I, this is state j. So these are the nodes or vertices which represent the state. एंड द ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी, सी यहाँ से यहाँ आने की प्रोबेबिलिटी 3/4 है, यहाँ से यहाँ आने की प्रोबेबिलिटी 3/4 है, यहाँ से यहाँ पे वापस आने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, यहाँ पे यहाँ से इस स्टेट में वापस आने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है. तो दिस इज योर मार्कोव चेन एज ग्राफ. ओके. And the set, let S be the state set, A denotes the directed graph set. So this complete G is equal to S comma A. This J is called digraph. Okay, digraph or transition graph. Digraph or transition. Now I will define you stochastic graph. Stochastic graph. A transition graph or digraph, a transition graph, or you can say digraph. Transition graph such that the arc weights. See, what is the meaning of arc weight? This 3/4 is known as the arc weight. 1/4 is known as arc weight. 3/4 is known as arc weight. Okay, the such that the arc weights are positive and sum of all arc weight going and coming to any state is equal to 1. Going and coming to any state is equal to 1. Is 1. So such type of graphs are called stochastic graph. You can take this example. यहाँ पे देखो I ग्राफ से I स्टेट से J पे जाने की प्रोबेबिलिटी 3/4 है. I से I पे ही आने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है. इसके जाने की और इससे इसी पे आने की प्रोबेबिलिटी का सम 1 है. That means it is called stochastic graph. Okay. Now path. What is the meaning of path? In digraph, path means this thing, sequence of states, okay, in which any vertex can be the final vertex for one state and can be initial vertex for another state. Okay, a path in a digraph is a sequence such that can be final vertex for any state and initial vertex for any state, vertex for another state. That is called path. Okay,
नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन एन एग्जाम्पल जिसमें मैं आपको सब कुछ ये सारी चीजें प्रूव करके बताऊं. फर्स्ट आई एम इरेजिंग दिस थिंग. Here I will make that graph. Because these things we will use. Okay, I am erasing this thing completely. And the question is, say आपके पास जो state है, that states are I, J and K. It is J, it is K. So here I, J, here K. Now I am going to write ओके. सो दिस इज योर मैट्रिक्स. अब इस मैट्रिक्स का आई एम मेकिंग अ स्टोकास्टिक ग्राफ. फर्स्टली आई विल मेक अ मार्कअप चेन. I will make that diagram. After making that diagram, I will show it is a stochastic graph, and then I will explain path also in that. So first I am taking, this is state I. Say this is state J, and this is state K. Okay, I represented the states with the help of vertex or node. Okay, now I से I पे जाने की probability है 3/4. I से J पे जाने की 1/4. I से K पे जाने की 0. Understood? Transition, ये जो arrow है, this is representing the transition. I से I पे आने का transition, I से K पे, I से J पे. This is the probability. Okay. Now J से I पे जाने का 1/4, J to I 1/4, J to J 1/2, and J to K 1/4, J to K 1/4, K to I 0, K to I 0, K to J 3/4, K to J 3/4, K to K 1/4. Now this is the Markov chain as graph. Okay, this is the Markov chain given to you. Now you have made that, represented that as graph. This the graph is called diagram. Markov chain as graph. Now इसमें path means this I, J. If this J is the final thing for this, then it is the initial for K. Okay, so this is your graph. Okay.